हजरत, आज के स्टॉक मार्केट प्रेजेंटेशन में शिरकत करने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो इल्म मेरे पास है और मैं आपके साथ शेयर करूंगा उससे आप कुछ सीख कर ही जाएंगे आज, इंशाअल्लाह ताला। शुरुआत करने से पहले मैं इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन कुवैत का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराया आप सबसे जुड़ने का और आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करने का। और इससे भी ऊपर एक बात और कहना चाहता हूँ, खास मेरे अजीज भाई सरी के दोस्त मोहम्मद हसन नूर साहब के साथ, कि 7 साल 8 साल पहले उन्होंने मुझे इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन से तारुफ कराया और तब से रब्ता आज तक कायम है। और ये खिदमत आगे भी चलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो हम हमारे प्रेजेंटेशन को चालू करते हैं। इससे पहले कि थोड़ा सा कल का जो एक रिकेप था वो एक थोड़ा पिक्टोरियल रूप में आ जाए आपके सामने, तो एक बेहतर रहेगा उसके लिए। कल हमने जाना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं मार्केट के अंदर। मार्केट इंडिसेस के बारे में इमरान भाई ने काफ़ी बताया आपको। जैसे सेंसेक्स जो होता है वो 30 स्टॉक्स का कंपोज होता है, और वहीं निफ्टी 50 जो होता है आपको वो 50 के स्टॉक्स का होता है। तो अमूमन इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता, एक्सेप्ट कि निफ्टी जो है वो 20 कंपनियां ज़्यादा है उसके अंदर, तो एक ब्रॉडर बेस है उसका। तो वहां पर आपको ज़्यादा कंपनियां मिल सकती है अच्छी क्वालिटी की एज कम्पेयर टू सेंसेक्स। सेंसेक्स में 30 कंपनी होती है, वो बेहतर होती है, लेकिन निफ्टी में 50 कंपनीज होती है। शेयर्स बाय एंड सेल करने का उन्होंने तरीका बताया, किस तरह से आप ब्रोकरेज के साथ अपना अकाउंट खुला सकते हैं और देन यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग। इसके अलावा सबसे मेन जो मकसद होता है किसी भी शख्स का, कि मैं स्टॉक मार्केट में क्यों जाऊं। तो स्टॉक मार्केट्स जो है आपको वो ह्यूज रिवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, बशर्ते कि वहाँ कोई रिस्क भी आपके साथ रहते ही हैं। और बहुत सारे रिस्क नोन होते हैं, बहुत सारे अननोन होते हैं। जब मैं नॉन रिस्क की बात करता हूं तो ये एक शख्स को मालूम होना चाहिए कि मैं किस कंपनी में अपना पैसा या अपना शेयर खरीदने जा रहा हूँ। ये उसका हक है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि कोई भी शेयर आप खरीदे तो उसकी बिजनेस को अंडरस्टैंड करना एक ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोग फार्मा में करते हैं, फार्मा सबके बस की बात नहीं होता है, लेकिन कुछ बिजनेसेस बहुत क्लीन होते हैं। जैसे आप ले लें जोमेटो का बिजनेस ले लें, टाटा पावर का ले लें, इनके बिजनेस बहुत क्लीन है, इसमें किसी तरह का कोई आपको झोल नहीं मिलेगा। वहीं आप रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लें, बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की होती है, जिस बिजनेस को आप समझ रखते हैं किसी शेयर के बारे में उसी में आप इन्वेस्ट करें, ये पहली राय है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला मादा जो होता है किसी भी इन्वेस्टर का, वो यही होता है कि अर्न हायर रिटर्न्स। हायर रिटर्न्स क्यों अर्न करने चाहिए? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी वेल्थ को किल करता है। किल यानी अगर उसको आसान लैंग्वेज में बताऊं, तो कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए आप 100 रुपीज़ की आज है, और अगर आपकी महंगाई दर जिसको इन्फ्लेशन कहा जाता है अगर वो 7% है, तो वही आपकी जो कंज्यूमेबल आइटम है वो 1 साल बाद आपकी हो जाएगी 107 हो जाएगी। करेक्ट, उसकी प्राइस इतनी बढ़ जाएगी बिकॉज इन्फ्लेशन आपका, आपकी रुपए की वैल्यू गिर रही है। उसको बीट करने के लिए यू नीड अ गुड प्रोटेक्शन, जिससे कि आपको वेल्थ भी क्रिएट हो और आप इस इन्फ्लेशन को बीट भी कर सकें। सो उसके लिए बहुत सारे एवेन्यूज हैं अपार्ट फ्रॉम मार्केट। बहुत सारे लोग एफडी करते हैं, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में करते हैं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में करते हैं, बहुत सारे लोग गोल्ड में भी करते हैं। तो हम इसका एक स्नैपशॉट भी देखेंगे ताकि आपको ये पता पड़ेगा कि वाई स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड अ प्लेस वेयर यू कैन प्रोटेक्ट एंड बिल्ड योर वेल्थ। थर्ड, हमने एक रेगुलर पासिव इनकम का फैक्टर देखा था कल। तो रेगुलर पासिव इनकम मीन्स डिविडेंड इनफ्लो। किसी भी स्टॉक में कोई शेयर आप खरीदते हैं तो उसमें जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो यू गेट डिविडेंड। सो डिविडेंड इज कॉल्ड योर पासिव इनकम, जैसा ही कल इमरान भाई ने बताया उसका। एक फैक्टर और है जो मैं अपनी तरफ से फील करता हूँ इस चीज़ के लिए, वो ये है कि जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो यू बिकम अ पार्शियल ओनर, एंड दैट प्राइड यू शुड ऑलवेज फील फॉर एनी गुड कंपनी
जिसका भी आप शेयर लेते हैं। तो दैट इज समथिंग लाइक अ क्वालिटेटिव थिंग विच यू कैन नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल आइटम्स, बट इट्स कॉल्ड ओनरशिप। लिक्विडिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। जब चाहे आप खरीद सकते हैं, जब चाहे आप बेच सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, नॉट लाइक योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जहां पर आपका इलिक्विड रहता है। डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग सेक्टर की है। फार्मा है, आईटी है, रियल एस्टेट है, फाइनेंशियल है। तो ये सब आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्टर्स की कंपनियां भी स्टॉक मार्केट में मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वेन एवर यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, यू डोंट नीड अ लार्ज सम ऑफ मनी, नॉट लाइक रियल एस्टेट। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, यू कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट। इवन आप म्यूचुअल फंड में 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, एंड दैट विल गिव यू अ वे टू द स्टॉक मार्केट। बहुत ही मिनिमल टाइम में आपका अकाउंट खुल जाता है एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। So basically, from my point of view, it's investing in a market is like a total command. Your investment is in your hand, your command, and you can do whatever you like. जब चाहे entry, जब चाहे exit, depending upon your need and requirement and your goals. Goals बहुत important है। When I say fundamental analysis आज के तारीख में, तो यहाँ पर आपको दो फैक्टर्स हैं फंडामेंटल के। एक रहेगा आपका क्वालिटेटिव फैक्टर्स। व्हेन आई से क्वालिटेटिव फैक्टर्स, जिसको हम किसी टर्म्स के अंदर मॉनेटरी पे मेजर नहीं कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव? कोई कंपनी है जिसके प्रमोटर्स हैं, मैनेजमेंट है, इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है, और उसका क्या बिजनेस है, ये सारे फैक्टर्स किसी भी कंपनी के लिए उसके नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं। प्रमोटर्स आपका एथिकल बिजनेस बताता है कि क्या प्रमोटर्स एथिकल है उनके बिजनेस में। मैनेजमेंट उनके इंटेंशंस बताता है कि हाउ दे आर प्रोजेक्टिंग देयर बिजनेस इन द कमिंग टाइम, irrespective or respective of whatever controllable and uncontrollable factors around you, risk factors। कुछ फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि रिसेंटली आप जियो पोलिटिकल ले लें, इसराइल और ईरान, दे आर नॉट इन कंट्रोल यू, सो वी कैन नॉट कंट्रोल दैट फैक्टर। But what other factors you can control is purchasing, procurement of your raw materials, staff, your expansion, your plans, everything। इंडस्ट्री कौन सी है, ये भी बहुत मायने रखता है आपके लिए। जिस इंडस्ट्री का सिक्लिकल होती है, तो वो एक पर्टिकुलर फेज में एक्सपेंशन होता है उसका, फिर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो फॉर एवर ग्रीन होती है और उसके अंदर किसी चीज़ का कोई भी ताल्लुक नहीं रहता है इसका। जैसे कि फूड इंडस्ट्री है, इंसान हर रोज सुबह उठेगा, दे नीड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग यू गो टू योर बाथरूम, टॉयलेट, यू विल टेक अ toothpaste and you will start brushing. So toothpaste can be like Colgate, Dabur. So these businesses are forever green, irrespective of whatever is happening surrounding. They are not impacted by any of the factors. Second is fundamental analysis in quantitative factors. So when I say quantitative, then measure, you can measure it. How you can measure it? The position of your company. बैलेंस शीट आपको बताती है कि एक कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है, एसेट्स क्या है उसके, लायबिलिटीज क्या है उसके, सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सारा आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। कितना रिसीवेबल है, रिसीवेबल यानी देनदारी, तो कितने लोग से आपका पैसा बाकी है। और उसी तरह आपका जो है लायबिलिटीज में आ जाता है लेनदारी के, कहाँ से आपको पैसा देना है आपको सारा। और इनकम स्टेटमेंट जो है वो एक मेजर फैक्टर है जो आपको ये दिखाता है कि आपका सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ है, एक्सपेंसेस कहाँ हैं, आपका कितना खर्चा हो रहा है। ये सारा इनकम स्टेटमेंट में आपको पता पड़ता है। तो ये चीज़ भी हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेशक चैट बॉक्स में ले सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि बीचों बीच में आपका क्वेश्चन भी लेता रहूं और
जवाब देता रहा हूं मैं। फाइनली हम बात करेंगे वैल्यूएशन मॉडल्स के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर, कि हम क्या क्या यूज कर सकते हैं किसी स्टॉक को वैल्यू करने के लिए। तो कमोबेश आज की तारीख में अगर आप कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स को छोड़ लें, जैसे कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल है या एंटरप्राइज वैल्यू ओवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मल्टीपल्स हैं, इन यूजुअली जनरल लोगों के लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक है प्राइस टू अर्निंग मॉडल, यानी आपके स्टॉक की प्राइस क्या है अर्निंग के कंपैरिजन में आपके कंपनी के। सिमिलरली प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, यानी मार्केट कैप या आपकी प्राइस जो है किसी स्टॉक की क्या है इक्विटी के कंपैरिजन में। और एक है जो आपका वो डिविडेंड यील्ड। जी इंशाल्लाह इस क्वेश्चन पे भी मैं आएंगे, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर इंशाल्लाह। नेक्स्ट, वैल्यूएशन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही लॉन्ग जर्नी और स्ट्रॉन्ग जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा, ताकि इससे किसी भी एक शख्स को ये अच्छी तरह पता लग जाना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट के क्या मायने हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके रिpercussions क्या लगते हैं। अच्छा, एक बात और है, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि वी couldn't सेव, हम वी couldn't सेव सो वी कैनॉट सेव, हाउ वी कैन इन्वेस्ट। वाला मैं आपके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा फॉर दिस, दैट वेन एवर यू आर अर्निंग समथिंग लाइक मंथली सैलरी और दैट वन, मेरी आप सबके लिए द ओनली सजेशन विच आई विल गिव यू इज दैट please first of all take out some saving and invest. Then whatever portion you have with you, start spending. Do not spend and then you say at the end of the month कि मेरे पास कुछ नहीं है। आई नो इट्स लाइक अ भाषण टाइप हो जाएगा आपके लिए, लेकिन ये एक सच्चाई है। अगर ये आप छोटा सा एक रूल फॉलो कर लेंगे ना, तो यू कैन रियली बिल्ड अ वेल्थ। दिस इज हाउ पीपल आर बिल्डिंग वेल्थ। ओके, so let's go to a pictorial thing which you will like it, I hope, and that's it. ये एक जर्नी है आपकी निफ्टी, जो कि 50 है अपना एंड निफ्टी का, जहाँ 50 स्टॉक्स है अपने। आई हैव टेकन अ रेंज ऑफ लाइक 23 years, starting from October 2001 after September 2001 attack, if you remember, in US, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, markets were like beaten down, and this is how the journey of Nifty has gone from that level. निफ्टी वॉज अराउंड 1076 पॉइंट के ऊपर था, स्टार्टेड मूविंग अप 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आने से पहले। इट वेंट ऑल द वे टू अ लेवल ऑफ लाइक 5000 और 8000, एंड देन इट स्लिप डाउन अगेन। इट वेंट अप in 2001, a European sovereign debt crisis occurred. The graph continued upward, and after corona there is no way of, you can say, unending bullish pattern is there, you can say. So अगर इस जर्नी का आप एक एनालिसिस करें और देखें कि अगर किसी शख्स ने 1076 पे अगर कुछ पैसे लगाए होते, तो इट वुड हैव गॉन टू अ लेवल ऑफ लाइक 25,122, and if you convert this into a return, or you can say how much gain you did in this 23 years, it comes around 2,334%. Can you imagine? This is the power of market. You invest and you keep calm, patience, and invest in a good companies. और ये तो मैं सिर्फ आपको इंडेक्स बता रहा हूँ जिसके अंदर डिविडेंड तो है ही नहीं इसके अंदर। Imagine how much dividend you would have got during these 23 years. This is the power of market.
Indeed, markets are falling nowadays because lots of factors are there. And जैसा कि चैट में पूछा है किसी ने, the simple reason which I would like to tell you, the markets are falling because there is no clarity. It's like a uncertainty that what Israel will do. Will it take any action before the US election, or it won't take any action, or it will take any action in like coming days? So that's unclarity is there. That's why the stock market still not confident, and earnings are coming very good for the for this second quarter, but still market is not cashing that earnings. So this is one of the big reason you can say that as of now, that the stock markets are like not growing up that fast. Earlier it was going up that fast, right? You leave Vodafone. If you have bought the Vodafone, just hold it. Vodafone, uh, this is a very good question. Inshallah, Birla Group will do something good for this. They need some financing, and they have got uh, some relief also from Supreme Court. So hold the stock. This is what I believe so. US market is having lots of other equations also apart from Israel and Iran. They are having, you can say something like the election. The election point is there, so it's wait till the election is there. Okay. So coming back to our presentation, निफ्टी के मैं आपको कंपोनेंट्स जरूर बताऊंगा. इसलिए बताऊंगा निफ्टी के कंपोनेंट्स कि यही 50 स्टॉक्स जो हैं वो बेंचमार्क को 1000 से 25,000 लेकर गए हैं. ओके. सो अच्छा, निफ्टी में सारे स्टॉक्स आपके शरिया कंप्लायंट नहीं है, सो दैट यू हैव टू चेक. और कल भी मैंने आपको एक राय दी थी कि BSE 500 शरिया इंडेक्स है. You can find the components on the BSE website and you can find the stocks over there. Let's talk about Nifty. 50 stocks are there. मैंने आपके सामने two sheets बनाई है. The first is first 25 stocks. The second is other 25 stocks. इंडस्ट्री देख लें आप इसके अंदर. ग्रीन हाईलाइटेड स्टॉक्स जो हैं वो आपके शरिया कंप्लायंट हैं एंड यू कैन इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स. तो अगर आप इसके सारे कॉलम्स देखेंगे तो मैंने 14 अक्टूबर 2024 की प्राइस रखी है हर एक स्टॉक की. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इस कंपनी के इन द मार्केट, हाँ, और मार्केट कैप क्या है उस कंपनी का, अर्निंग पर शेयर कितनी है और प्राइस टू अर्निंग कितनी है. प्राइस टू अर्निंग मैं आपको यहीं पे एक छोटा सा एक ब्रीफ कर लेता हूँ आगे जाने से पहले, बताने से पहले, कि अगर आप जैसे 742 हिंडाल्को की प्राइस है. लेट्स टेक द फर्स्ट स्टॉक हिंडाल्को. 742 की प्राइस है और अगर अर्निंग पर शेयर उसकी 47.90 है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो दैट इज कॉल्ड माय प्राइस टू अर्निंग. यानी एक शेयर की क्या मार्केट प्राइस है और एक शेयर पे हिंडाल्को कितना अर्न करा प्रॉफिट के रूप में. व्हेन यू डिवाइड 742 by 47.9 you will get 15.5. Is it okay? Clear? I hope you people are getting. Sorry boss, ICICI Bank is not a Sharia compliant. No, that's not. It's not Sharia compliant. Bank, I think nobody in India, you won't find any bank with Sharia compliant. No. Maybe Hassan Noor Saab can give more knowledge about it. By mistake, it has been highlighted here. No, it's not. This is the second page where you can find all this stocks. And before moving on to inshallah, I will share the presentation with you. No problem. And let's go to the third slide, which I have taken a snapshot from BSE 500 Sharia compliant stocks. So the website name is asiaindex.co.in. This is the fully owned subsidiary of BSE Sensex. And this is the one snapshot of around like 25, 30 companies I have taken from that.
constituent, symbol, and sector. And you can go there and you will find 500 stocks in the similar fashion over there. Is it clear? If it is there in 500 BSC Sharia 500 complex index, yes, HCL is Sharia compliant. Okay, coming back to the presentation. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पीपल दे यूजुअली आस्क मी वन क्वेश्चन दैट व्हाई वी शुडंट इन्वेस्ट इन गोल्ड. गोल्ड में तो कोई बुराई नहीं है. पीपल आस्क मी व्हाई वी शुडंट बाय रियल एस्टेट. यस, रियल एस्टेट जो भी बाय करते हैं, ऑफ कोर्स दिस इज देयर प्रेफरेंस. और उनका प्रेफरेंस में ये होता है कि दे बाय एन अपार्टमेंट, give it on rent, they get rental income, no problem. This is also a kind of investment which, but for me, frankly speaking, I don't believe in real estate investment. एक घर हो आपका और एक आपका छोटा सा प्लॉट हो जहाँ पर अगर आपको मिल जाए अच्छी खुली हवा सांस की, तो बढ़िया है. सो लेट्स डू वन कंपैरिजन. आई होप यू विल लव इट. ये कंपैरिजन कर रखा है हमने 2001, 2024 एंड योर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स. पहला जो है ग्राफ वो इक्विटी का है, जो कि हमने निफ्टी के बेसिस पे कर रखा है कि अगर 100 रुपीज़ आपने निफ्टी में इन्वेस्ट किए होते तो आज की तारीख में आपके वो 100 रुपीज़ वुड हैव कन्वर्टेड टू और गॉन अप टू 2334. और जैसा कि मैं बताया कि 23 ईयर्स के ऊपर अगर रिटर्न देखा जाए तो इट विल बी लाइक 2334%, राइट? बट एनुअली it will be 14.68%, close to 15%. Let's go to gold. Gold, if you invested same 100 rupees in 2001, it would have been 979.67 in current scenario with a annual profit rate of 10.5%. FDs are prominent. Many people ask me that why we shouldn't keep our amount with banks. और आपको इस्लामिक भी मिल जाती है इसके अंदर बहुत सारी चीजें, तो दैट इज देम. ओके, एंड इट गिव्स यू जस्ट 7.46%. अगर मैं 7.46 कहता हूं तो 7.46 इज सिमिलर लाइक योर इन्फ्लेशन. यही इंडिया में यही रेट चलती है इंडिया की इन्फ्लेशन की, 5 से 7%, राइट? तो इफ यू कीप योर मनी इन द बैंक and you earn a rate of 7.46, frankly speaking, you are just beating, you are not beating, actually you are just equivalent to inflation and your wealth remains same. 100 का 100 ही है, उसमें कोई गेन नहीं है. It looks like that you are getting a number. 100 रुपये आपके 107 हो जाएंगे, but when you go and purchase in the market, इन्फ्लेशन में वो चीज़ें 100 की थी वो 107 की हो गई है, तो basically you don't get anything. Is it clear? And the last one I have taken real estate. Yes, very impressive. आपका 100 rupees turn out to be 1251.42 and it gives you a return of like 12%. So equity 15%, real estate 12%, gold आपका तकरीबन 10.5% है और बैंक का सबसे कम है 7.46%, राइट? अच्छा, इक्विटी जो है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट देर इज टू बिगेस्ट पॉजिटिव फैक्टर्स, जो कि मैंने आपको पहली स्लाइड में ही बोला था. द फर्स्ट फैक्टर इज लिक्विडिटी, जो कि रियल एस्टेट में आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपका अमाउंट बहुत बड़ा होता है. तो यू नीड टू फाइंड अ बायर, और इफ यू वांट टू सेल इट इन हरी then you have to compromise with the price. Correct? The second is the payment mode. Real estate never take your whole white money, right? You have to do some sort of percentage of the transaction in black. This is general. I'm talking in general. हो सकता है बहुत सारे लोग white में भी करते हो full का full, but in general this is the pattern in India real estate, जहां पर आपको कुछ amount जो है वो कैश का देना ही पड़ता है apart from the white whichever you are quoting in the registry. So these are the biggest two factors if you compare equity investment with real estate. Clear? Okay.
Okay, let's go. Stocks. Whenever you have some stocks in your basket, it gives you a partial ownership. कोई भी stock आपने ले लिया, you become a partial owner. This is the one way how you invest in the market. Second is mutual fund, a pool of fund by many investors. अभी रिसेंटली शायद कोटक ने एक एमएनसी फंड लॉन्च किया है, मल्टीनेशनल कंपनीज का ऐसा कुछ है. तो दैट इज आल्सो लाइक you starting of the with 10 rupees of NAV, right? So you can just buy one unit in 10 rupees and become a part of the ownership of many stocks. So mutual fund is slightly different from stock ownership. Uh, your fund is the owner of that particular all those companies and you are awarded units. But that is a safe play for those people who do not have a direct or straight exposure towards the investment stock or market, right? Third is money market funds are there available, like for short term you can park your money for 7 days, 10 days, 15 days. These are very creative uh, investment products available in the market. And the latest is the unit link insurance policy. Particularly I do not believe, but yes, people are buying this one because they are getting two things in this. First one is they are getting insurance for their life, and secondly is their portion of the ULIP is going to the market. So like you say that after taking some amount for your premium, like mortality charges, uh, uh, then charges for like brokerage and transaction, GST and all this, whatever amount is left, like 80%, 85%, it goes to the market. So you have two coverage in that one. One is the market exposure, and second one is your insurance. But I hardly believe in these type of products. Either you should have insurance full if you would like, if you believe in insurance. Otherwise, stock market is the best place for you to invest. Okay, let's begin our session of fundamental analysis, and we will start with share. The moment you buy one share, you become a joint owner in the company along with all other owners. Every share has two faces. जैसे आपका एक कॉइन होता है, कॉइन का जो है आपका दो पहलू होता है, टेल एंड हेड. उसी तरह एक शेयर के दो फेसेस होते हैं. व्हाट आर दे? फर्स्ट इज द शेयर हैज अ फेस वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड पार वैल्यू. Just a minute, please. The power is getting disconnected. Okay. Is it clear? Every share has two faces. The first one is face value, par value, and the other one is called market price. So why face value is important? Because the face value has only one relevant thing, is the dividend distribution. Dividend is never distributed on the market price. अगर आपके पास कोई शेयर है, जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस का ले रखा है with a price of like 2,700, and Reliance says that we will give you like 1,000% bonus in dividend, right? 1,000% dividend, you will think that it will be like more than 27,000 rupees. No, no, no. It is based upon their face value. Reliance के एक शेयर की face value है 10 रुपए. So when you say 10 rupees, and on that 1,000%, it will be 100 rupees. So you will get only 100 rupees per share based upon the face value, not on the market price. The other one is the market price, which you can see there. And this price is decided by investors. तो अगर आपको लगता है कि मार्केट में 2,700 is cheap for Reliance, yes, you can go and own the share. नहीं लगता है तो just leave it and wait for it to correct, and then you can enter it. But market gives you immense opportunity to enter and exit, right? चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आज. One of my likely stock is Zomato. Zomato की फेस वैल्यू है 1 रुपीस,
शेयर्स अवेलेबल इन मार्केट है आपके 872 करोड़। ओके, मार्केट प्राइस आज की तारीख में है 280 रुपीज, एक शेयर की प्राइस है। फेस वैल्यू है उसकी सिर्फ 1 रुपया। मार्केट प्राइस है उसकी 280 रुपीज। मार्केट कैप is 243,883 crore. This is the power of Zomato. You need face value just to know the dividend distribution जो कि Zomato ने नहीं दिया है. A graph is there for you. This is Zomato's graph. I have taken it like for starting from May till October. Okay. अगर आप प्राइस देखेंगे तो it was around 180 and it quickly reached to 280 in like 5 months period from May to October. We will see why it has gone up that high, inshallah. How to choose a stock? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। एक recap है, what we learned till now, why you need to invest, what is the share, and what are the power of shareholders. As a shareholders, what you can do and what you cannot do, right? वोटिंग राइट्स होते हैं आपके पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चूज करने का पावर आपके पास होता है, ऑडिटर्स को आपके पास पावर चूज करने का पावर होता है। नाउ द बिगेस्ट पजल या कह सकते हैं परप्लेक्स सिचुएशन जो होती है फॉर इन्वेस्टर्स इज हाउ टू चूज अ स्टॉक फ्रॉम एन ओशियन ऑफ लाइक 5,309 listed stocks on the BSE or 2,206 stocks on the NSE. किन किन स्टॉक्स का आप एनालिसिस करेंगे? नॉट पॉसिबल, राइट? So that is the way we have to find out that which stocks are good to invest and which are not. When I say stock selection, no one can maximize profits by investing in old shares. आप 5,309 stocks के अंदर पैसा लगाकर you cannot be a rich person. Similarly, if you want to invest in Nifty, you cannot invest in all 50 shares. Not possible, right? अगर possible हो भी गया, the most important thing for you is that how you will manage them. आप किस किस पे निगाह रखेंगे, आप कहाँ तक हर एक के अर्निंग्स को फॉलो करेंगे, कहाँ तक किसी की न्यूज़ को फॉलो करेंगे, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज नॉट लाइक इन्वेस्टमेंट यू हैव डन एंड यू फॉरगॉट. You have to keep an eye on your selection of stocks in terms of their management news, in terms of their corporate news, in terms of their earnings. थोड़ा सा आपको उसको निगाह रखनी पड़ेगी. It cannot be like this fill forget. No, that is not a thing about the investment, right? So whenever you do stock selection, दो मेथड उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है फंडामेंटल और एक है टेक्निकल. फंडामेंटल पार्ट मैं आपका आज अभी लूंगा लास्ट में, और टेक्निकल पार्ट विल बी टेकन बाय मोहम्मद हसन नूर साहब टुमारो इंशाल्लाह. व्हाई देयर इज अ नीड फॉर फंडामेंटल एनालिसिस? कोई स्टॉक है, अगर आज टाटा पावर का स्टॉक है, 455 की प्राइस है, फॉर मी सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि क्या ये ओवर वैल्यूड है और अभी भी इसके अंदर स्टीम बची हुई है. कैन आई गो फॉर इट नाउ और आई नीड टू वेट फॉर सम करेक्शन? This all you will valued or you will do a kind of fundamental analysis. Then only you will be understand that whether it is overvalued or undervalued. Secondly, health of the company. As I told you, this is you can know it only through balance sheet and income statement. And to do a fundamental analysis, there are two things which you'll do. One is qualitative and other is quantitative. That we'll discuss shortly now. And the aim is to identify the companies that are fundamentally strong to invest. Clear? Okay.
Qualitative analysis. It means a comprehensive understanding of company's potential and guiding better investment decisions. Qualitative analysis, we do not follow any numbers, but we follow only in like management, promoters, industry, business, and the most important thing, moat of the business. I will let you know what is the moat of the business. अगर आप किसी टाटा के स्टॉक की बात करते हैं तो यू बिलीव इन टाटा. A study was done in like 2018, 2020, I don't remember exact year, where Tata Group was considered as the most ethical business group in India, even before Ambani. So Tata का नाम आते ही you believe like a trust that okay, I trust this stock because it belongs to Tata. तो टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर आप अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आज तक किसी कोई कंपनी में कभी कोई प्रॉब्लम या मिसमैनेजमेंट की कोई न्यूज़ आपको रेयरली कभी मिलेगी उसके अंदर. अंबानी का भी सेम इशू है. दे आर वेरी गुड प्रमोटर्स, मैनेजमेंट, थिंकर. सो उनके प्लान्स बहुत, विजन उनका बहुत क्लियर होता है. और अगर आप बैड मैनेजमेंट की बात करें, आई विल कोट पेटीएम. Stock which was once like 2,200 rupees, it came and fell all the way to like level of 380, 400 rupees, and it never touched the level of 2,200, which was the initial public offer price. Do you remember that one? So इसके इशू क्या होगा कि इन्होंने जितने भी बिजनेस किए फिनेंस के थ्रू देयर पोर्टल, and that was not modified, or you can say not given permitted or permission by RBI. So these type of things, when promoters ignore regulators warnings, then regulators put hefty penalty on them, or they close their businesses also. So that's why Paytm never got a chance to go back to that high level, or continuously under pressure रहा ये. Similarly, Ola, जो कि एक recently listed company है, it went all the way like 136 or like this, and then again started coming down. और अभी भी ओला के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो भावेश अग्रवाल जी हैं, he does not see what Ola scooters are facing huge problems, huge. अगर आप जाएंगे सर्विस सेंटर पे, you will find lots of Ola scooters are lying there to get like repaired, और हर रोज कस्टमर्स की बहुत शिकायत है. इवन आई हर्ड अ न्यूज दैट वन ऑफ द कस्टमर पुट लाइक his scooter on fire also. So these type of management are little bit bad for the company. और जितनी ऐसी न्यूज आती है मार्केट उसको एक नेगेटिव सेंस में लेता है, एंड मार्केट डू नॉट ट्रस्ट सच टाइप ऑफ स्टॉक्स, एंड इमीडिएटली गुड इन्वेस्टर्स दे लीव द स्टॉक्स. इंडस्ट्री है जैसे फार्मा है, मेटल्स है, ऑयल है, कंज्यूमर, ये आपको देखना बहुत जरूरी है. क्वालिटी एनालिसिस आपका. तो जिस भी बिजनेस में या जिस भी कंपनी का शेयर आप ले रहे हैं, प्लीज उसका बिजनेस, उसकी एबीसीडी, उसका बेसिक्स जरूर समझें, जरूर. विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, यू विल नॉट रीप ह्यूज बेनिफिट्स ओवर देयर. थर्ड इज योर कंपिटिटर्स. जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, आपके कंपिटिटर्स की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि विच, हो सकता है कि जो कंपिटिटर्स हो आपका, विच एवर द कंपिटिटर इज देयर, मे बी इट इज अवेलेबल मच चीप राइट इन द मार्केट एज कंपेयर टू द stock which you are targeting. So whenever you are comparing, planning to stock like investment in Nestle, please take care that Colgate and Dabur are also there, and see their evolution also. Moat of the business, as I told you, one example I gave you, the early morning, going to bathroom, and first thing you use is the toothpaste. Toothpaste can be of like Dabur, Colgate, all these are very prominent in most of the houses. The other example is like tractor of Mahindra. Whenever you think about agriculture, and the only tractor which comes to your mind is tractor of Mahindra. This is the moat of the business, that people cannot ignore these products. They have to go and purchase it. So this is called the moat of the business. Last and final, which is very critical, is that management analysis. Management analysis, when I say,
Every year, company publishes their annual report, and those annual report पे छोटे से 2 पेज 3 पेज there is management discussion. Management discussion tells you a lot about what company did in the year, the current year, and what the company is planning for the next year, right? They have their business plan, and it gives you a lot of confidence that whether you should hold this stock or you exit. So please read management analysis, which is very, very important for every stock, right? Whichever you are investing. Okay, let's move to the second vector, which is called quantitative analysis. And quantitative, the number analysis, it comes toward the financial health and the valuation of many financial data, like what are the trends of the particular stock, economic indicators. All these comes into your fundamentals analysis part 2. And in this particular quantitative analysis, we will do reading of income statement, what is the source of income, avenues of expenses, right? Then margins are very important. आप जो भी सामान बेच रहे हैं, what is your sales, what is the cost of sales, and these two things you take in mind, and whatever gross profit you have, that is called gross margin. So if you have gross margin, then only your other expenses will be met, right? Otherwise you will not be able to meet your expenses and your company will go in loss. So margin is very important to understand that how much margin the company is earning. We will discuss through an example. That will be much clear to you. Cash flow, very, very important. आपका business कितना cash flow आपके लिए generate कर रहा है. Either you are still putting money in your business through your pocket, from your pocket, or your business is self-sufficient in generating good cash and the business is doing expansion from its own source of funding. The last factor, that is very, very critical, very significant. Please check liability side of any stock and to know that how in debt the company is. If the company is heavily indebted, please avoid these companies, because in rising interest rate in the market, the company has to shelf a lot of money to just paying interest cost. So this is a very critical thing which you must see while choosing or selecting a stock. I'm taking an example of Zomato. This is the income statement of Zomato for the last 4 years. Okay. You can see the sales starting with 1,845 crore in 2021. It reached to double in 4108. Then it got an increment of like 34%. And at 5506, and then again 37% jump, it reached to 7,542 crore. So you see the business is growing, clearly growing. Yes, operating expenses also growing, but see the gross profit. The company which was in loss in 21, in 22, suddenly turned into gross profit in 23, and you see the profit of 24. It is 1,502 crores. Do you see that? So this is the power of their business. The business is very simple. And now they are diversifying the business also, getting some ticketing business also, right? So this is also adding some flavor, some spices to their overall business. And net profit, 886 crore loss was there in 2021. It increased slightly to reach 1,100 and turned first time into profit in 23, which was 117 crore. And in 2024, it reached to 1,371 crore. This is a complete turnover of the company by their management, by their vision. And I will discuss this with you, taking some part of their management analysis, inshallah. Last
slide was about the income statement. This slide is about बैलेंस शीट. अच्छा, बैलेंस शीट में एक बात आप देखेंगे कि अगर टोटल एसेट्स जैसे यहां देखें आप 24 में, इट इज 24,325 करोड़. ओके, इसमें से तकरीबन 93% जो है आपका एसेट्स का, दैट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स. करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी अगर आप इन दोनों को जोड़ भी दें, it is approximately 1,550 crore, which is nothing. The company can pay these liabilities at any point of time without any requirement of borrowing. This company is amazing. See how shareholder equity, which was just like 7,000 3 years ago, duration of 22, 23, and 24, it just tripled. This is the beauty of Zomato and in their business, right? Now, some of the key ratios which you always check for any stock which you are aiming to put it in your portfolio. For Zomato, the sales growth is like 122.6% sales growth. Then it was 34%, then 37%. You remember, we talked about sale in the previous slides. Here, this 1845 to 410, then 55, then 752. Net profit growth, yes, in 22 it came down, went up by 110%, and then went up to 1,073% up in 24. Net profit margin, which I was talking about, that ultimately you will be lost if your expenses are higher than your revenues. 48%, it was negative. Yes, company was suffering. Again, next year, it reduced 26.7% now here from 48% earlier. Then first time it turned into profit with a 2.1% margin. And last year, March 2024, company turned into big profit with 18.2%. This you have to see. Look the journey. Minus, minus, then reduction in the minus here, then up and then up. Return on equity. Equity is the basically a corpus of shareholders. This is shareholders' money, right? On that, company is earning now 6%. Okay. And finance cost, you can see here, no finance cost because they don't have any debt, right? And debt to equity, same zero for the reason that the company has no debt. So this is something like the most preferred feature by any investors, that if a company they don't have debt or even very little debt, it's okay. Because having a big debt, it means that first of all, whatever your earnings, a big portion of your earnings will go to serving interest of the debt. And the finally, which I was talking about, the cash flow, operating cash flow and net cash flow. Operating cash flow, when I take operating cash flow, somebody is ask you, कि भाई operating cash flow क्या होता है? Operating cash flow is a pure cash flow which is generated by business only. उसके अंदर किसी तरह की कोई financing, investing नहीं होती है. It's all pure business operations. जहां पर आपका cash flow negative होता है, it means that you are having more operational expenses as compared to your operational revenue. So this was like minus 316 in 2021. It went to 508, but in 23, it turned to positive, which is 225 crore. And in 24, it went up, it took a huge leap of around maybe 5 times, and it reached to 1,379 crore, which is the best thing for the company. Okay, that's clear. Now let's move to the other things. This is what I was talking about in the qualitative analysis. Last point I told you about management discussion. अगर आप थोड़ा सा मैनेजमेंट डिस्कशन को अगर पढ़ेंगे किसी भी एनुअल रिपोर्ट का, दिस इज व्हाट आई फाउंड इन जोमेटोज एनुअल रिपोर्ट. नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज GOV, that is called gross order value. Gross order value went up by 93%. You can say 100% up from the last year. And it is like 12,469 crore की वैल्यू ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू उन्होंने ली है, right?
The second thing is orders. How many orders people are placing with Zomato? 203 million, which was 71% up from the last year. इतने लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर रखे हैं 2024 में जोमेटो के साथ. एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स, हर बार 5.1 मिलियन कस्टमर्स ने मंथली उसके साथ ट्रांजेक्शन किया है. 5.1 मिलियन, 51 लाख एवरी मंथ. सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड यू विल गेट लाइक 60 मिलियन. 6 करोड़ लोगों ने ट्रांजेक्शन किया है जोमेटो के साथ. एवरेज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर डे पर स्टोर, जितने भी स्टोर हैं उसके जोमेटो के, 797,000 यानी 8 लाख रुपए का बिजनेस पर स्टोर जोमेटो ने किया है. 69% जंप है उस वैल्यू के अंदर. जस्ट इमेजिन, दिस इज द पावर ऑफ जोमेटोज बिजनेस. नंबर ऑफ स्टोर्स 149 और ज्यादा खोले उन्होंने, एंड इट रीच टू 526 फ्रॉम द लास्ट ईयर, राइट. एंड वेयर हाउसिंग कैपेसिटी, जो नए नए वेयर हाउस खोलते हैं चीजें रखने के लिए, ब्रांड एक्वायर करने के लिए, एंड इट वेंट अप टू 4.8 मिलियन स्क्वायर फीट. वेयर हाउसेस की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज दे हैव टू परचेज रॉ मटेरियल एंड थिंग्स फॉर मैनी ब्रांड्स, and they keep it like the stuff ready. The moment you ask them, they start for the delivery, right? So these are the points which give you a confidence that okay, this is something an amazing stock. But whether to purchase it now or not, that is a key question. Now, this all happened 2024, and I'm talking about what Zomato's management is discussing for the next coming year. Zomato is forecast to grow earnings and revenue by 44% and 25% per annum respectively. ये management का मानना है. According to their analysis, their studies, they have their own research house and they all have their own data with them. EPS जो कि अभी बहुत कम लेवल पर है, 1.6 रुपीज है उसका खाली, expected to grow by 45% per annum. Huge. This is something like an amazing if they really materializes this percent of growth. And return of equity, which is currently now 6%, it is expected to go like threefolds, around 16% in the 3 years. This is the Zomato's management discussion. Of course, Zomato is under Sharia. There's no debt and they don't deal with anything. I really know. Zomato is haram? Well, I don't know. No warehouse, they have their own. This warehouse belongs to their own. I'm just taking an example. I'm just taking an example of Zomato, okay? So please try to understand in terms of like understanding the stock selection. I'm not talking about that go and buy Zomato. I'm just talking about you have to learn that what you should see. Okay, this is what I am looking at around. Thank you for the information. अच्छा, किसी भी इकोनॉमिक साइकिल के अंदर जैसे मेटल की होती है एक साइकिल रहती है, राइट. सिमिलरली साइकिल ऑफ मैनी सिक्लिकल, सीमेंट की सिक्लिकल होती है. जैसे बारिश वगैरह होती है तो सीमेंट सेक्टर गोज डाउन बिकॉज ऑफ लोअर एक्टिविटीज ऑन इन टर्म्स ऑफ लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स है सारे. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, राइट. तो ये एक सर्कल होता है किसी भी एक इकोनॉमी का, which I'll just give you a brief idea that how 4 phases of economic cycle is there. आउट परफॉर्मर्स जो कि एक्सपेंशन फेज में होते हैं, विच इज लाइक आईटी स्टॉक्स, फाइनेंशियल्स, विच अगेन हम नहीं ले सकते हैं बिकॉज टॉकिंग अबाउट द बैंक्स एंड नॉन बी एंड एनबीएफसी. कम्युनिकेशंस, यस, भारतीय एयरटेल एंड ऑल दीज स्टॉक्स. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, जो भी कंज्यूमर आइटम होते हैं एक्सपेंशन फेज के अंदर, तो दे आर आउट परफॉर्मर्स. So whenever there's expansion of the economy, these are the first one to take the lead, that because you get many orders for these companies. So this expansion peak जब जाता है तब energy, materials और financial stocks peak पे सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं, राइट. फाइनेंशियल्स इसलिए बार बार आ रहे हैं यहाँ पर बिकॉज इन
peak is the time when you have the lowest interest rate and people are going to purchase a lot of new things through borrowings, loans. तो ये बहुत ज्यादा चलते हैं इस टाइम के अंदर, पीक पर, जब इकोनॉमी पीक पर होती है, सबके पास बहुत पैसा होता है, स्टिल दे गो फॉर लाइक लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दे गो एंड बाय ओवर देयर। ठीक है, वेन एवर द डाउनफॉल इज देयर, तो जैसे कि पहला बताया आपको मैंने, आपका फूड है, एजुकेशन है, फार्मा है, ये सब आउट परफॉर्म रहते हैं, बिकॉज कि कुछ भी हो जाए, इन तीन चीज़ों को तो आपको हमेशा ही अपने साथ रखना है। एंड वेन एवर द एक्सपेंशन फेज स्टार्ट्स, जब वापस आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू करती है, तो रियल एस्टेट और इंडस्ट्रीज होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, जो लोन ज़्यादा बोरो करती है, तो दे स्टार्ट गोइंग अप इन द outperformer. Okay, valuation analysis, the final part of the whole things. We have completed qualitative things, we have completed quantitative things. Now let's go to valuation of the valuation techniques. Okay, I will just go through it quickly. Price to earnings, price and earnings. अगर किसी स्टॉक की प्राइस है मान लीजिए 1000 रुपीज एंड अर्निंग इज जस्ट 50 रुपीज, ओके, पर शेयर, तो you can just tell me that in how many years you will cover your price. When you divide 1000 by 50, it takes you 20 years. So will you go for this stock with like 20 P? Yes, people opt for these stocks, and 20 is considered as a good, reasonable PE for the market. Even companies for like Nestle, people are ready to pay even the 70. यानी अगर कंपनी का स्टॉक है 7000 रुपीज और अर्निंग जस्ट 100 रुपीज, द पी इज 70 for Nestle, right? So in that case, what happened, that there is a huge growth potential you have for your stocks. That's why people go and they go for the higher stocks PE, right? अच्छा, पी का जो है वो मेन मीनिंग ये रहता है कि आप इसको कंपेयर करते हैं ओवरऑल वैल्यूएशन से। आज अगर आप निफ्टी की जो 50 स्टॉक्स हैं, उनका अगर मैं टोटल मार्केट कैप और उनकी टोटल अर्निंग सबकी 50 स्टॉक्स की मैं निकालूं, तो मेरे पास पी आता है 24। तो अगर कोई भी स्टॉक लेस देन 24 ट्रेड कर रहा है, यस इट कैन बी अट्रैक्टिव फॉर मी, और मुझे उसके बारे में जानना है, तो मैं पी के थ्रू जाऊंगा देखने के लिए। देन आई विल गो टू द फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड देन आई विल सी क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो, और अगर किसी से कंपेयर भी आप करते हैं, दैट आल्सो यू कैन डू इट in the same industry. You can compare like Colgate with Dabur, and you can check which P is lower in the peer group. It is called attractive. Secondly, I will take price to book value. Price to book value is mean market cap, or you can say price of the stock, and book value means what is the equity value of all the shareholders. When you divide, it becomes like price to, yeah, better you can say that lower the PE, better the share is. Yes, there's a potential to grow. Okay, so this is the best thing that you got the point. Similarly, for price to book value, price to book value for usually banks are very high, but for other stocks, it remains around 1 to 2. Any stock which having a price to book value of like 10 or 12 or 15, they are considered to be very expensive, because इक्विटी की वैल्यू आपकी ज्यादा नहीं है और मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा है, सो कंसिडर टू बी वेरी एक्सपेंसिव। सो टेक केयर ऑफ दिस फैक्टर आल्सो व्हेन यू कंपेयर एनी स्टॉक। डिविडेंड यील्ड, अगर मेरे को कोई भी स्टॉक 50 रुपीज का डिविडेंड देता है, उसकी प्राइस जो है, मान लीजिए रिलायंस की प्राइस है 1000, 50 रुपए का डिविडेंड मेरे को मिला, इट मीन्स आई एम गेटिंग 5%। यस, इट इज वेरी हेल्दी। इसलिए हेल्दी बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग डिविडेंड, you are even getting the capital appreciation also. So you are getting two things, dividend and capital appreciation. Suppose stock goes from 1000 to 1150, so you will get total of 200, right? So ultimately on the investment of 1000, you are getting 200 rupees, and which is if you convert to return gains, it will be 20%. Is it clear?
Higher the dividend yield, better it is. So always look for a stock with a dividend yield of more than 5%. 5%, why I'm saying that? It is like inflation beating rate for you. So whatever your stock appreciation is a wealth for you, and whatever you're getting dividend is like you're beating the inflation. Okay. I have taken for Tata Power as just a good stock, I find it. तो आप इसको देखें, पावर सेक्टर है, मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर गवर्नमेंट में, एम्स टू इंस्टॉल 500 गीगावाट कैपेसिटी बाय 2030, एथिकल मैनेजमेंट है, डोमिनेंस इन रूफटॉप सोलर सेगमेंट है. टाटा पावर के बारे में मार्केट कैप है उसका 1,44,925 करोड़. स्टॉक पी देख लें आप 39.5. If I am not wrong, like a year ago, the price of Tata stock was around 194, 195, 200 rupees. A year ago, I'm talking about. At that time, this PE was like 22, 23. So now the PE has gone high because market price जब भी आपकी ऊपर जाती है और आपकी अर्निंग उसको मैच नहीं कर पाती है तो योर PE goes up. ओके. अगर बुलिश मार्केट है जहाँ पे सब लोग पैसा लगा रहे हैं तो यस, इवन योर अर्निंग्स आर नॉट दैट मच ग्रोइंग, स्टिल योर प्राइस विल गो अप. This is the something like bullish trend is there in the market, and people are believing that Tata will get more and more order, and this earning will increase to bring down the price to earning. Okay. Other factor is that you can see here high and low, 52-week high, 495, 231. Yeah, it was 231, around 200 rupees like that. Okay. Dividend yield is very low, 0.44. So dividend is not a big factor for me. If I invest in Tata Power, I will go for like capital appreciation. This is the graph for last 1 year, starting from like 231 and reaching like 450. So your money is getting double in like 1 year with all new orders Tata Power is getting, and the company management has some vision for that. The peer group comparison, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू पी. मैं अगर आप मुझे बोलेंगे सबसे पहले मैं पी पे जाऊंगा और देखिए मीडियन जो है यहाँ पे लिखा हुआ 36.5, राइट. सो फॉर मी, इफ एनी स्टॉक लाइक एनटीपीसी इज अ गुड स्टॉक, Adani Power is a good stock, yes, 14.75. And the best thing is that you see return on capital employed. Adani Power is having 32.25, which is really very good as compared to Tata Power. And then you have like dividend yield, market cap, everything. So net quarter profit also very important to check it. Variation also important to check it. As long as the company is growing in terms of profitability, it's a good stock to go. This is the Tata Power profit and loss for the last like 10 years. Starting from 33,000 crore, it reached to 62,000 crore, 61,000 crore in 2024. So double. Similarly, if you see the net profit, it was just 123 and it reached to 4,280 crores. So this way you can just justify that your stock selection is really very good. And here you have given the growth, compounded sales growth for last 10 years, 5 years, 3 years. All this is available on screen.in. You can go to screen.in. And I've just taken for another set of example is like IT. Comparison of Infosys and TCS. Both are very good companies with no debt, Sharia compliant. You can see that one. Return on equity of Tata is 50%. Net profit margin is similar, 17 and 19. But see the earning per share, it is 63 only and is 127. So this is the beauty of Tata, right? Book value is 211 to 50. Most important is the PE ratio, 27.3. Yes, it is lower, 33.39, but still I will go for TCS for the reason I will see return on equity also, I will see cash flow from the business also, and I will see net sales also. So when you see all these parameters, given a chance, I prefer TCS over Infosys. Imran bhai, I would like to give some, if we have, do we have some time? Yes, you can. We need to start our Q&A sessions as well. So accordingly, you can.
Okay, I would just like to put some questions if people got some of my point or not. This Sure, is one sure. question for you. Please write your answer in your chat box. Let's make it some more interactive. Please write your answer in chat box. There are two companies operating in the same sector. The market price of one company is 2,300, annual earning is 100. Other company is at 1,000 and annual earning per share is 80. Which company will you prefer to buy? According to the PE ratio, okay? Okay, perfect. Yes, second company's PE is much lower as compared to the first one. Okay. There's one more question for you. Yes, absolutely right. You will prefer TCS because TCS will have more liquidity and it is the part of Nifty, which is better quality as compared to latent view. Okay, let's go to third question. It bears upon the dividend yield. Which company is giving dividend yield better? Tell me. I Okay, think that's it. Remember, you can start the question session if you would like to. yes. Thank you so much. Most welcome. Wow, that was indeed an in-depth explanation about the Indian stock market, where all the analysis and different financial ratios and valuations were covered. Thank you so much. Jazak-Allahu Khair. Now, we will move towards the question and answer sessions. Um, I have picked up few questions which were shared in the chat box. Few were answered. There are few. I would like to take one by one. The first question was, what is the difference between balance sheet and income statement? I think it was cleared Okay. also, but Yeah, again, balance sheet tells you what is the status of your company as of a particular date. जैसे कि बैलेंस शीट ऑफ 31st December 2023, it will give you what exactly assets you have and what exactly liabilities you have. तो कितना पैसा आपके पास है और कितने को देनदारी है लेनदारी है आपकी, that is the exact position of your business. Income statement shows you that during the whole year how much you have earned and how much you have expense and what is your net profit for the whole 12 months.
और फॉर एनी पीरियड, जैसे क्वार्टरली होती है तो फॉर द 3 months पीरियड. But balance sheet is as of one date, the last day of the quarter or the year. Income statement is like a story of like 3 months or 1 year. So that gives you something like your profitability. Other one is your financial position. Thank you so much. Participants are requested to share their questions in the chat box. There's one more question. Now this is something, when can we expect the bullish phase again? That Noor Bhai will tell you. Inshallah, in the tomorrow's session. Bullish phase will come, inshallah. Actually, there are some geopolitical concerns are going on. So, frankly speaking, the market is still discounting, and you can say they're adjusting the fear factor. So that's why this is something like you're not getting a real push. So even if your earnings will come good, still you have the fear factor in the market. So that kind of worry the market has to get rid of to start a bullish pattern. Great, thank you. There's one more question. They're asking, who are the brokers in Kuwait to invest in KSE? Yes, one is the KFH trade. You can go and open your account. And KFH trade I preferred because KFH trade is Islamic Sharia compliant stocks you will find over to trade. So you can trade any all stocks like not like NBK or not like Commercial Bank of Kuwait, or so those stocks you will not get in the list of trading. And other one, there are many like Al Wasit is there, uh, NBK Watani Online is there. So these are the few prominent brokerage houses are there. You can go and open your account over there. There is also a question related to IPO. Yeah. Can we just give a small description on IPO? IPO basically it means initial public offering. So whenever you have IPO, it means that the company is now going to release certain portion of promoters' stake in the market. If you say like Hyundai IPO was the recent one, where they or no don't go to Hyundai, go to Lulu. The Lulu IPO is coming on 28th of October. So what Yusuf Bhai is going to do, the Lulu's owner, is that he's going to dilute his like 25% stake. So around 2.5 billion shares will be released to the market for other investors and to subscribe for their Lulu stock. So that is called initial public offering. When you give it to public, it is called initial public IPO. मेरा इस पे क्वेश्चन है फर्दर आईपीओ पे, Yeah. यानी ऑलवेज आईपीओ इज ओवर सब्सक्राइब. अभी एक एनर्जी का भी आ रहा है, इट इज जी. बहुत Bari Green सब्सक्राइब. Energy. Yeah. ग्रीन एनर्जी, वारी ग्रीन एनर्जी. Well, I'm तो subscribing Day2 only. Yes. यस, तो सभी का एक एक ही अकाउंट होता है या मैक्सिमम दो हुआ, तो जी. कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं कि यानी, और इट इज अ लॉटरी बेस, किस तरीके से होता है प्रोसेस, हाउ वी कैन गेट दिस? बहुत सारे आईपीओ में प्रो रेटा बेसिस होता है, तो दे गिव टू ईच एंड एवरी वन. अदरवाइज इन जनरल बहुत कम को मिलता है. सो इट गोज लाइक लॉटरी वाइज. If you really want to get any shares in the IPO, I suggest you apply at the last day. Probably you will get it. But if you apply on the first day, maybe you will not get it. I don't know what is the. ओके. If any other, Mohammad Noor Bhai, if you can shed some light on this. See, IPO is based on a lot of criteria, like the merchant bankers, those who are running the IPO, they evaluate as per the region, state, age criteria, senior citizen. Because I was telling one of my friend to apply through his father's name, because his father is 80 years old, and every time I saw, he always gets the shares. Because in 80 plus age, a lot of people, nobody applies, or maybe very less people are there. This is one of the Yeah. criteria. Oh, So really? age group, state-wise, education, and the number of shares applied, this is all the criteria. And then they sort it out, and accordingly they distribute. So if you fit in the criteria and you have applied for 500 shares,
then they will see how many people are there in this criteria. So accordingly, they will give, instead of 500, they will give you 5 shares or 50 shares or 100 shares only. Okay. Thank you, Noor bhai. Thank you so much, Noor Saab. There's a question here. While company offers a higher dividend yield, what other financial metrics should be considered before deciding which company to invest in? That we have discussed. Yeah, Like you need to see return on equity. You need to see some more ratios. Like the most important thing is the finance cost. So that you have to check. और इसके अलावा आप पीयर ग्रुप का भी देख सकते हैं. तो these are the key parameter apart from dividend yield. PE, PBV, dividend yield are 3 most prominent. But if you would like to go to income statement and balance sheet, please check their net profit margin. If a net profit margin is like 2%, 3%, please do not go for these type of companies with a very low margin of profitability for you to, and they will not distribute anything for you also. So that is also key criteria. One thing just I would like to add on the dividend, that as Shoaib said, the profitability, which he already explained, there are 2 most important criteria for the dividends, which company pays the dividend. First, they has to be profitable, as per the Shoaib, he already mentioned that. The second is there are 2 types of companies, they pay a very, very high dividend. First of all, multinational companies, those who are sitting outside of India, but they have 70% of the ownership in India. So they want to get more and more cash from their Indian company to their parent company sitting in US, sitting in Germany, sitting in Japan. So what they do, they give lot of profit to their parent company. So in that process, we are also holding the share of that company. So we also get a lot of dividend. The second is the government companies. The government want the companies which they have like BPCL, HPCL, ONGC to pay government lot of profit, you know. So what happened in the process? They earn money. They are very profitable company, BPCL, HPCL, Indian Oil, and ONGC. So they pay government lot of dividend. Whatever they earn, they try to give it to the government, and the government has a lot of pressure on them to give them more and more cash. So in the process, we also, as a small shareholder who buys these shares, we also get a lot of dividend as per that. So you can see these are the 2 major factors, you know. Yeah. Thank you so much, Hassan Saab. It was in depth. Now people are asking about particular shares, I believe. Okay. Small cap companies share we can keep for long term. If it is a good company, yeah, sure, you can keep it for the long term. Noor bhai would like to take this question. See, for the small shares and small cap companies, the managements are not having that track record, or the management is not that clear, or the small cap Transparency is company big issue. can get hit anytime with any of the economic cycle. So it's you need to understand that, and you need to know a lot of inside of that company, where you have the knowledge, who is the management, what they are doing, how great they are management, कोई अच्छी रेपुटेड है कि चोर मैनेजमेंट है, या बंद हो जाएगी ये कंपनी 2 साल के बाद, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स. सो इसलिए स्मॉल कैप में जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, बैंक्स होती है और इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा नहीं लगाते. और स्मॉल कैप में नॉर्मली 90%, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 90% छोटे छोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वही पैसा लगाते हैं, उनके ही उस पर वो स्मॉल कैप कंपनी चलती. बड़े जो इन्वेस्टर्स है, दे डोंट इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स, और अगर इन्वेस्ट भी करते तो वेरी चूजी, वेरी स्मॉल अमाउंट. शोएब जो खुद ही एक फंड मैनेजर है, इनसे आप सवाल पूछ सकते हैं कि इनका एक्सपोजर कितना है स्मॉल कैप कंपनी के अंदर, ये खुद ही बताएंगे. नहीं, बहुत ही लो रखते हैं हम इसके अंदर. Just for the risk factor, we don't take that much of risk to going to small companies, because ultimately clients' money is our money. So we don't take it as a granted. Even in India also, whenever we manage the client's portfolio, we hardly take any exposure toward the micro or small cap stocks. Mid cap stocks, yes, you can go for it.
Just like a question has been asked here that how do you differentiate between small and mid caps? So any company with a less than like 500 crore rupees, we consider it as a small cap, micro cap company. Any company above 1,000 crore to 5,000 crore, we consider it a mid cap stocks. There is a question, I believe this was answered, but again, how much maximum debt is acceptable for Sharia? 1:1. Debt to equity should not be more than 1. But again, yesterday also we discussed the same thing, that you cannot define a company based upon Sharia on only this factor. Ultimately, we need to see the income statement, that whether the portion of the total operating revenue you have, it should not be more than 33% of interest. So whichever company has lower interest portion, interest earning, I mean to say, you consider it as Sharia compliant. If it is higher than that, please avoid these companies. I would like to add on this. I saw a lot of questions raised for Zomato. And see, when it comes to Sharia compliant, the first thing is the business. The company is in Sharia compliant business or not. Till now, if I'm not mistaken, till last quarter, Zomato was Sharia compliant. But since they started the new business of liquor and delivery of liquor, so a lot of analysts, they started making it as non-Sharia compliant. So till now, it was Sharia compliant. Maybe like 4 months back, it was Sharia compliant. And because the moment they started the liquor business, so the business and the liquor business is booming, I guess, probably, because even the portion of a non-Sharia, which should not be more than 5%, it exceeded more than 5%. So it become non-Sharia. So this is the first factor which we need to understand if a company is a Sharia or a non-Sharia. The business line itself. Then come the other factors, you know, the debt and other stuff. हसन भाई एक क्वेश्चन आया है और रिगार्डिंग आईपीओ फॉर आईपीओ से रिलेटेड ही है अगर एचएनआई उसमें ऑप्शन में लगाए तो व्हाट आर द चांसेस See, you cannot define के HNI में लगाओ या रिटेल पोर्शन में लगाओ. Depends on के कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं. जैसा हायुंडई का भी 2 दिन पहला जो लिस्ट हुआ वो अंडर सब्सक्राइब हुआ. जितने लोग ने जितना शेयर जो उसमें अप्लाई किए तो सबको मिला, 100% मिला. जिसने अगर 100 अप्लाई किया उसको 100 मिला, जिसने 200 अप्लाई किया उसको 200 मिला, क्योंकि वो अंडर सब्सक्राइब हुआ था. तो डिपेंड्स ऑन दैट. अगर कोई शेयर 200% 200 टाइम्स वो हो रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है, तो आपके सामने 200 आदमी खड़े हैं और आपको 200 आदमी को पार करके वो शेयर लेना है, तो अंदाजा लगाइए. कोई शेयर तो 1000 टाइम्स सब्सक्राइब हुए रिसेंटली, मतलब एसएमई और इसके शेयर, तो उसमें तो कोई चांस ही नहीं है कि आपको कोई शेयर मिलेगा. तो डिपेंड्स ऑन कि वो उसको ओवर सब्सक्राइब कितने टाइम होता है. There's one more question. Which is the most trusted online resource to see Sharia compliant stocks? That already we answered, the BSE 500 Sharia index. That is the best source to check that which Indian companies are Sharia index or not. So in my presentation, I have given even the website address also. Just click on that one. It will take you the 500 companies list over there. And there is a lot of paid services which you can subscribe, not that big money, maybe some 6,000, 10,000, something like this rupees for 1 year, such as Islamically. They also has a very good database for looking into Sharia compliant and non-Sharia compliant with detailed report and their analysis. And there are a lot of free services also for Islamic Sharia compliant stocks. So which was Imran had already spoken yesterday on that. So this is available, a lot of things, and it's not like something which you don't know, or it's up to you how much. And I will tell you one thing very clearly. See, this is a stock market where you invest your money for the sake of having return. So no business is free business. You have to spend some cost on it.
like learning costs, like expenses, like providing some researches. So you subscribe, pay 5,000, 10,000, subscribe, so that your investment is protected, well informed. You know, so Correct. Islamically also, if you are fearful that कि मुझे कोई हराम इनकम नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, हलाल चाहिए, ओके, गेट सम सर्विस, सम कंसल्टेंसी, 10,000 15,000 पे करो साल का, और वसूल है पैसा आपका, आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं. Thank you so much. There's one more question. With the ongoing de-dollarization and the announcement of the upcoming BRICS currency, what is the future of global stock market, in particular the Indian stock market? This will have no impact on Indian stock market. Till Indian economy is booming, the world economy is booming, the market will going to continue as it is. Dollarization or de-dollarization will not have any impact. Only some companies, they might face some difficulty here and there. This is nothing has to do with financial. This has to do with geopolitical issues. So this Correct. is arm twisting by major power. Other than that, this is nothing as such. Yeah. Because कि वो ग्रुप बन गया ना चाइना रशिया का, they are trading more on yuan after restrictions on Russian ruble. That's why. There are questions related to re-explain something. I believe we will be sharing the recordings. So the things which are covered, you can see in the recordings. How can we trade in different markets? Example, Abu Dhabi, Saudi, Japan, etc., while not being in that country? I don't think there should be such option. For GCC, yes, you can trade. You have like Mubashir, which we do trade, as well as you have Al Wasit also. And so you can go for those like GCC and US market, you can cover through that. Even European market also you can cover through that. There are options for you available over there. When you go and when you fill the form, you have to tick mark that which markets you are preferring or you are aiming to trade. So that way you can trade in any other market like US, Europe, GCC, all markets. So please check like Mubashir, Wasit, they will give you options for that. Are these options available for Indians as well from India? From India, no, you need to check with Kotak Securities or ICICI. They have an option. Since you are residing in Kuwait, it's very easy from here to trade US market, UK market, whichever market you want. And there is no interference by the Indian regulators here in Kuwait. So you as an Indian can open an account in US wherever you want. So ये बहुत आसानी से यहाँ से हो सकता है, money transfer होता है, money can come in, nobody will ask you any questions. And there's a lot of international brokers which you can open, like TD Ameritrade, like Charles Schwab, like interactive brokers. There's lots of services available. आप गूगल पे जाके मारिए कि यूएस के टॉप ब्रोकर्स के नाम बताइए, सब एक लिस्ट आ जाएगी फट से टॉप 10 की. जाके उनको ईमेल करिए, फटाफट उन लोग आपको फॉर्म भेज देंगे, बोलेंगे भर के भेज दो और पैसा ट्रांसफर कर दो. दैट्स इट. और आप अपना ट्रेड करिए उनसे. कोई आपको टैक्स का इशू नहीं है, कोई लीगल, कोई इंडियन और नॉन इंडियन का कोई मैटर नहीं है, जब तक कि आप कुवैत के अंदर और कुवैत के अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं. There's a question about now people are concerned about halal and haram here. So are stock trading AI bots legal and halal? If so, which one would you recommend? Nobody take this question about NVIDIA, probably are you asking? No issue. See, first of all, lot of when it comes to Sharia, even the terms in the contract which you signed with the brokers can make it halal and haram, not the product itself. Even the terms which you are signing with an agreement, like say for example, somebody asked a question: is options and futures and options halal or haram? It has both the things, halal as well as haram. How come haram? Because it is based on a price only. There is no delivery being given, no delivery being taken. So this is haram. But if there is a delivery being taken or delivery being given in the contract, then it will become halal.
The same way for AI bots. AI bot is what? AI bot is a computerized program where you put some rules and automatically it keeps trading. The market starts in quiet time from, say, for example, 6:45 till 1 o'clock. And it keeps trading, buying, selling, buying, selling, buying, selling, buying, selling, buying, selling, maybe 1,000 times in a day. But at the end, if you have some stocks which you want to take the delivery of that stocks, the bot will say, no, you cannot take delivery. By compulsion, you have to sell in the market. That means this is just a price and you are trading a price. You are not trading a stock. The stock, as Shoaib said, it's an ownership. You don't have the ownership. Ownership comes when you get the stock in your account. So you are owner. Now it's a different issue कि आपको लेना है अपने अकाउंट में या नहीं, but the option should be available to take that in your delivery. आप डिलीवरी नहीं लेंगे, कोई आपको पकड़ना नहीं है. आप डे ट्रेडिंग कर रहे, कोई आपको पकड़ना नहीं है. वो हलाल है आपके लिए, 100% हलाल है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस डिलीवरी, वो ट्रेड करने के बाद आप डिलीवरी ले सके एट द एंड ऑफ द डे, या आपकी मर्जी आप डिलीवरी ले या नहीं ले, लेकिन उसमें ऑप्शन ये होना चाहिए ब्रोकर के पास कि आप डिलीवरी लेना चाहे तो आप ले सकते हो. तो इट मेक्स इट हलाल. लेकिन हराम कब होता है? जब यू ओनली ट्रेड ए प्राइस एंड देयर इज नो डिलीवरी. लाइक से फॉर एग्जांपल एक और एक क्वेश्चन आया था गोल्ड बॉन्ड के ऊपर इंडिया के. इंडिया का गोल्ड बॉन्ड क्या है? इंडिया का गोल्ड बॉन्ड ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है आपको कि आपको गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ये सर्टिफिकेट हमारे से खरीद लीजिए. ये बॉन्ड जो है गोल्ड का जो करंट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर हम आपको बेचेंगे ये शेयर. तो आप क्या करते हो? जाते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज का जो करंट रेट गोल्ड का चल रहा है वो पैसा देते हो और वो रेट में आप गोल्ड खरीदते हो. लेकिन आप गोल्ड नहीं खरीद रहे हो, आप सर्टिफिकेट खरीदते हो. आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि आप ओनर है इतने 100 10 ग्राम के, 1 किलो के, 50 ग्राम के ओनर है, आपने इतना खरीदा है, ठीक है. आप रखते हो उसको और 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद या 5 साल के बाद आप उसको बेचना चाहते हो तो आप बेच सकते हो. लेकिन आप बोलेंगे नहीं मुझे बेचना नहीं है, मुझे ये गोल्ड चाहिए डिलीवरी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी नहीं ये डिलीवरी वाला नहीं है मामला, यहाँ पर बस प्राइस के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, बेच रहे हो और सेल कर रहे हो, तो फिर वो हराम हो जाता है. तो वो एग्रीमेंट के अंदर डिलीवरी लेने का एक ऑप्शन होना चाहिए. जैसा अभी मसलन केएफएच है, केएफएच एग्जैक्टली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड कर रही है वैसा ऑप्शन आपको देता है. कैसा देता है कि आप जाइए केएफएच के अंदर, मुझे गोल्ड बाय करना है. आप गोल्ड बाय करोगे, वो एक सर्टिफिकेट देगा या आपके अकाउंट में ऑनलाइन आ जाएगा कि आपने एक 10 ग्राम गोल्ड बाय किया. आप कल या परसों या 4 दिन के बाद या 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद केएफएच में जाइए और बोलिए मेरा ये 10 ग्राम का जो गोल्ड है मुझे दो. उन लोग ताबड़तोड़ आपको वो 10 ग्राम का गोल्ड आपके हाथ में दे देंगे. तो ये होता है शरिया कंप्लायंट. लेकिन यही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलेंगे कि मैंने जो गोल्ड बाय किया मुझे गोल्ड दो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी नहीं तुम इसको कंपलसरी जो आज का रेट चल रहा है उस पर बेचो, हम आपको वो प्राइस दे देंगे. तो ये नॉन शरिया हो जाता है.